सहज एक चीज कर लेगा, मैं कभी ऑनलाइन नहीं आऊंगा भाई साहब। आ जाइए, आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर, है ना। कुछ जानते हैं प्रेशर के बारे में? इतना प्रेशर है जेडी सर के क्लास में, दैट्स आल्सो अ प्रेशर ना, देयर इज सो मच ऑफ प्रेशर इन हिज क्लास, दैट मींस some sort of a force which acts on you. Do you agree or not? Right? चलो, प्रेशर को समझने से पहले एक चीज समझते हैं, the concept of something called thrust. ठीक है? Imagine this is a tabletop. This is a tabletop. समझ में आया? So let's make the table. अब मजा लो, मैं ड्रॉ करना स्टार्ट मत कर दो, ठीक है? पहले आप समझिए साइंस को, आप मजे लो इसका। Imagine this is a tabletop. Agreed? This is a tabletop. On this tabletop, I am trying to apply a force. ये एक tabletop है, इसके ऊपर मैं एक force apply कर रहा हूँ, right? Now I can apply the force. Imagine this smartboard screen is a tabletop, and I am applying a force. How many ways I can apply a force? ऐसे apply कर सकता हूँ, ऐसे apply कर सकता हूँ, ऊपर से apply कर सकता हूँ। तो basically there are two ways. One is that I apply at 90 degree to it. Do you understand what is 90 degree? Draw a line here and the force is applied at 90 degree. Another is any angle other than 90 degree. Do you agree? तो आ जाओ उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो say for example that एक force इस पे act करता है in this direction. Say the force is acting on this direction. Is this force acting at 90 degree? This force is not acting at 90 degree. Right? There is another force which is acting exactly at 90 degree to the surface. है ना? दोनों को ही तो हम force बोल सकते हैं. This is also a force, but this is a special force. What is the speciality about it? It is acting at 90 degree to the surface. ऐसे force को mechanics में हम बोलते हैं thrust. क्या बोलते हैं? Thrust. याद करो. When the rocket lifts off, we say it lifts with a thrust. Rocket is applying force 90 degree to the ground, not tera tura, okay? That's called thrust, and the rocket gets an upward lift, which is also 90 degree to the ground. So all thrusts are force, but all force are not thrust. इतना समझ में आया कि नहीं? Is this clear? Okay. So let's say allow me 1 minute, okay? I'll just change out this. Mute your lines, beta. I'll just change this off. Just give me 1 minute. Okay. Right, fine. आ जाओ. So let me take a 3D object which is this is a cuboid. You know this is a cuboid, right? Cuboid बनाना जानते हो? कैसे बनाते हैं? A4 पेपर देखा है? One A4 paper, another A4 paper, A4 paper, A4 paper, A4 paper, A4 paper, one cuboid done. है ना? सिलेंडर बनाना आता है? कुकुम्बर का खीरा, खीरे के ऊपर खीरा 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 खीरे पर सिलेंडर। कैरम बोर्ड खेलते हैं ना हम, कॉइन के ऊपर कॉइन 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 सिलेंडर। ये याद रखना है, ये हमें सरफेस एरिया वॉल्यूम में ये टेक्निक बड़ा काम में आएगा। क्यूब बनाना आता है? क्यूब, टेक अ स्क्वायर, पाइल मेनी स्क्वायर्स, वो जो हम कॉफी मग के नीचे कोस्टर रखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो क्यूब बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड के ऊपर व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ऑन दिस क्यूबॉइड, वी आर ट्राइंग टू अप्लाई अ फोर्स। नाउ सी, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स नाउ, आई एम अप्लाइंग दिस इज अ 3D डायग्राम, सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ओके। आई एम अप्लाइंग अ फोर्स लाइक दिस, इफ यू आर एबल टू अप्रिशिएट इट, इट्स 3D। नहीं समझोगे, फिर भी ऐसे भी नहीं समझोगे। Okay, now say suppose the force is coming in this direction. This force is perpendicular to this surface. What I mean to say is that if I draw a dash line out here, then this angle is 90 degree. And when the angle is 90 degree, then the force takes a new name which is known as thrust. Is this understood? It is known as thrust. तो अभी प्रेशर पढ़ने से पहले एक बात पढ़ते हैं, the concept of thrust. So what is thrust?
force that acts at 90 degree to a surface, right? 90 डिग्री का एक और नाम क्या होता है बेटा? That is acts at perpendicular or right angle. इसको हम क्या कहते हैं? Thrust कहते हैं. This is a force only, but its name will be different. We will call it a thrust. ठीक है? Understood? Now, if I take this cuboid, a cuboid is like a new shoe box that you get, right? नया shoe box is like a cuboid. So इसमें क्या क्या measurement होता है बेटा? एक length होता है, एक breadth या width होता है और एक height होता है. इसके अलावा तो और कुछ नहीं होता है. Imagine this room is also a cuboid if you think like a rectangle. So you'll have a length. This is the length. There will be a height and there will be a width. Means we can say every face is a rectangle. Do you agree with me? Every face is a rectangle. Cuboid के हर face को देखो तो अपने shoe box के हर face को देखो. Every face is a rectangle. You can say, sir, the other two were just like a square. Yes, a square is also a rectangle. A square is a rectangle, but a rectangle is not a square. What is the criteria for a rectangle? Opposite sides should be at 90 degree. It meets it. What is the criteria for a square? Opposite sides should be equal. But in the case of a rectangle, opposite sides are not equal. So every square is a rectangle, but every rectangle is not a square. Have you understood? These logics you should understand by now. So every face of this cuboid is a rectangle. Okay? Okay. Then how many faces you have? You have 6 faces. क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एक शू बॉक्स में कितने फेस है? टॉप बॉटम 2, साइड में 2 ढुलकी, कितने हो गए? 4. और क्या रह गया? एक फ्रंट में एक बैक में, बस 6 faces. Okay, 6 faces. Now if you look at the top surface, then the top surface resembles like a rectangle. Do you agree or not? Top surface means A B C D. ये A B C D क्या हो गया? एक rectangle है ना? So you will say, no sir, it is a parallelogram. My dear child, this is a 3D drawing. है ना? समझ में आया? तो ये parallelogram नहीं है, ये rectangle है. It's a 3D drawing. It's a rectangle. So what is the area of a rectangle? Have you studied or not? Yes, what is it? मुंह बंद क्यों हो जाता है? 2 into L plus B area of a rectangle. हाँ देखो, बढ़िया आंसर वही दिया है, लेकिन L into B मत बोलो. L का नाम क्या है? लक्ष्य सिंह. B मतलब क्या है? भरत राम. Length into breadth, or you can say a length times the width. That is the area. Understood? 2 into L plus B is the perimeter. वो सब क्लियर हो जाएगा. Have you understood? This is the area. Pressure is a ratio of thrust upon the area on which the thrust is acting. When you go to your school will be teaching you pressure as force per unit area, force upon area. Grade 8 में maximum books में यही लिखा रहेगा, force upon area. ऐसा नहीं कि वो wrong है, पर वो mechanics की भाषा में exactly correct नहीं है. If you want to calculate pressure, the force cannot act at any other angle other than 90 degree. Now you may question, but sir, you mean to say that if you only act the force this way, there is pressure. ऐसे करने से pressure नहीं है. In that case, we take a component of force which you will not understand now. You will understand this in grade 11. The perfect definition of pressure is thrust upon area. So whenever pressure, you want to calculate pressure, 2 actors come into play. There are 2 actors. One is of thrust. You should know what is the thrust means, a type of pressure. Achha, what will be the unit of thrust? Same Newton. Thrust is a force. Special force hai. Thrust is a special force. So the force hi hai na. And it will be divided upon the area on which it is acting upon. Baat samajh mein aa raha hai? And that is the reason pressure will have, what is the unit of area? Area kya hota hai? If your length is in meter, your breadth is in meter,
then your area will be in meter square, meter into meter, meter square. And thrust is in Newton. So the SI unit of pressure is known as Newton per meter square. Newton per meter square. Whereas when you go to the fuel station and you will inflate your tire, you will say what? 36 kar do piche. That is PSI. Because you are a gulam. Pound per square inch. See how the British measured it. According to the British, area is measured in inch into inch. So what do they get in the bottom? Inch square. Got it? And according to the British, I told you, weight is measured in pound. Pound is the force. So they'll measure it in pound. LBS, we write it. So British will measure pressure as pound per square inch. And this is known as PSI, pound per square inch. And this is what is there fed in the fuel stations. ये जो आप गाड़ियों में हवा डालते हैं ना, PSI. ऐसा नहीं कि ये यूनिट नहीं है, ये यूनिट भी है, पर लोगों को इसकी आदत ही नहीं है. If we convert and say in this value, that guy will tell you, oh साहब ऐसा टायर में हवा नहीं जाता, 36, 40 ऐसा बोलो, because we are used to filling air in PSI. But this is the SI unit of pressure. And this SI unit of pressure is given a special name which is called Pascal. रास्कल लिख के मत आ जाना, पास्कल है. समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं पहले वो बोलो. Have you understood? What did we learn so far? Before learning, Pascal was a scientist name. Very good. किसी दिन ये भी बड़ा साइंटिस्ट हो जाएगा और हम लोग बोलेंगे what is the unit? SI unit अर्नब. A ball traveling at the speed of 5 अर्नब per second ऐसे करके आ जाएगा, है ना? तो हमने क्या क्या पढ़ा प्रेशर जानने से पहले? अब हम लिखेंगे, अभी नहीं. प्रेशर जानने से पहले the first thing we learned was what is thrust. What is thrust? Thrust is a special kind of force, a force which acts perpendicular to a surface, 90 degree. Why are we learning thrust? Because only thrust create pressure. Forces which act at 90 degree only create pressure. Now pressure is a ratio. That means it should have a numerator, it should have a denominator. If the numerator is thrust, we have to bring a denominator also. What is the denominator? जिस area पे आप act कर रहे थे उसका area, not any other area. I cannot put the area of this surface. Do you understand? Achha, by the way, what is the area of this surface? This is also a rectangle. Height multiplied by breadth. HB हो जाएगा. So if you want to find out the pressure here, you cannot say F by HB. वो तो गलत हो जाएगा. F कहाँ पे एक्ट हो रहा है? LB पे एक्ट हो रहा है. जहां फोर्स एक्ट होगा वही का एरिया. And then that ratio should have something which is known as a unit. Unit is what? Newton per meter square, because the SI unit for length is always meter. Even if they give you in centimeter, you are supposed to convert it into meter. And then the force should be always in Newton. So Newton per meter square, which is also given a name called Pascal. Now you think about our engineering days. As I told you, in our engineering days, we used to learn MKS. In MKS, what is the unit of force? Kaun bolega? What is the unit of force? This shows what you are learning. kg force. kg force. So हमने क्या सीखा था? kgf. Very good. kg force, and you have to give an area. Our area used to be centimeter into centimeter, centimeter. So this is also unit of pressure. Next time when you walk around in your Pebble City and you see so many water hydrant enclosures, there will be pressure gauges. आप उनको जाके पढ़ सकते हैं. उसमें रहेगा, इसमें भी रहेगा, Pascal भी रहेगा. There pressure has got many units: atmosphere, bar, Pascal, torr, then kgf per cm square, Newton per meter square. Which one do we use? If you go to submarine people who go below the water, they don't follow all this. They follow torr. Torr. Torr has come after the name of a Italian scientist whose name was Evangelista Torricelli. उसके नाम से आया. हाँ, मेरे नाम से होता तो जैद आता, जैद आता कुछ ऐसा है ना. Evangelista Torricelli. He was the guy who measured atmospheric pressure. ATA भी रहेगा. Then there will be another unit when you go to. Have you ever measured blood pressure in any hospital? Have you seen in what unit the blood pressure is measured? mm of Hg, millimeter of mercury. That is also a separate unit. How many millimeters does the mercury column? Blood pressure जब हम measure करते हैं, the mercury column rises.
हाउ मच डज इट राइज, ये सब चीज हमें सीखना है एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा इतना कुछ समझ में आया, then we will do a fair copy of this. Do you now understand? Because see, if you all don't study at home, you will not recall. That's what I'm saying. Holidays does not mean that sir will only give you a worksheet. Studying the content is also, and by going by the videos trails, I don't think all of you are watching. As I said, how many students are we? 9 offline and 2 online, means 11. 11 children means how many hours of viewership should be there on a video? Minimum 11 hours. नहीं है ना, मैं खोल के दिखा दूं? 11 आवर्स तो मिनिमम होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब हम तो नहीं देख रहे हैं उस वीडियो को, आप पढ़ भी नहीं रहे हैं। अगर मैं अभी सवाल पूछूं, है ना सहज, बोलो तो सहज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? यस, वेरी गुड। वेट? सर वेट, अभी इडली डोसा बनेगा। सर वेट, कल ही पढ़ा था सर, डोसा बन रहा है अभी। वेट, जलेबी। वेट सर, सांप आएगा। वेट, वो देखो पीछे पलट के देख रहा है अभी। क्यों पीछे पलटना पड़ रहा है? जब तक मैं उसको पूछ रहा हूं ये पीछे पलट रहा है, क्यों? हाँ नहीं सर, आप रुक जाइए। क्यों पीछे पलट रहे हो? पीछे इसलिए पलट रहे हो क्योंकि पढ़ के नहीं आए हो। ओके, आई एम आस्किंग, व्हाट इज द कन्वर्शन बिटवीन न्यूटन एंड केजी? There is no conversion between Newton and kg. One is a weight and one is a mass. I'm asking a stupid question. You could not diagnose this. You were rather ready to give me a figure called 9.8, which is itself is wrong. You cannot come. Can you compare Newton and kg? I am asking a simple question. What is the conversion between Newton and kg? And you are ready to answer. Newton and kg में कोई conversion नहीं है. Newton measures force, kg measures mass. है ना? अभियान घर में पढ़ रहे हैं कि नहीं? 2 क्लास के बीच में आपका नोट्स रेडी होना चाहिए। आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। एंड व्हाट विल हैपन, यू नो, इफ यू डोंट स्टडी नाउ, आपका क्लास टेस्ट जब आएगा आपके स्कोर्स कम आएंगे। एंड यू विल नॉट, योर न्यू, एटलीस्ट हु ऑल आर फॉलोइंग द न्यू टेक्स्ट बुक, यू वोंट गेट अ क्वेश्चन लाइक डिफरेंशिएट, डिफाइन मास, ऐसा नहीं आएगा। आपको 2 बच्चा ड्रॉ करके दे देगा, वो हॉस्पिटल जैसा केस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। You will be able to answer only if you know the topic. And when I teach you, you all know everything. I agree that. But when I stop and I come back after 1 week, everything is gone. बोलो सहज, आपने नोट्स बनाए वेट्स और मास के? नहीं बनाए ना? कहाँ बनाए? हाँ? Right now with me, show me your notes of weights and mass. Yes. Not the class notes, sir. Not class notes. I'm not saying class notes. I'm showing your self notes. Yes, very good. Please show. ये क्या क्लास नोट्स है? अच्छा, तो मेरा सवाल पूछिए, गिव मी द कन्वर्शन बिटवीन केजी फोर्स एंड न्यूटन। I explained it in class. What should be the weight of a body whose mass is 1 kg? The weight should be also 1 kg. Very good. Very good. Weight should be also 1 kg. वॉश बेसिन में पानी भर के उसमें तैरते रहिए। हम लोग मॉडर्न हो ना, हमारे टीचर कहते थे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आपको तो थोड़ा मॉडर्न कहना पड़ेगा ना। डिप योरसेल्फ इन द वॉश बेसिन। 1 kg force is equal to 1 Newton. He's correct. He's correct. What is the difference in the concept of weight between Earth and Moon? Yeah, Avian बोलिए तो. What is the difference in the concept? I don't want any figures. I want you. अरे, your name is not Avian, beta. I'm asking Avian. You are a teacher. You are a teacher. I'm a grade 6 boy in your apartment. I'm asking, what is the difference or what is the concept of weight on Moon and weight on Earth? How will you explain? Yeah. The weight of moon. No, not weight of Moon. I'm asking, what is the concept of weight of an object on Moon and weight of an object on Earth? What all will you like to speak? आप कुछ भी बोल सकते हैं इस टॉपिक के बारे में।
इट पुल्स, हाँ नहीं, आप अगले 20 मिनट के लिए म्यूट है। हाँ आराम करो। हाँ बोलो अभियन। So on for 1 course is 5.8 meters. वो तो 6 का बच्चा नहीं समझेगा ना, 6 के बच्चे को अच्छे स्टोरी में समझाओ ना क्या होता है। यू कैन स्पीक इन हिंदी ऑल्सो, आई डोंट माइंड। हाउ विल अ ग्रेट, हाँ Is supposed to pull harder because it has more. यस, नॉट हार्डर, यू से अर्थ पुल्स इट। मैं क्या अभी राइट क्लिक करूं अर्नव, राइट क्लिक करने से जूम में क्या प्रिंट होता है पता है? He has been kicked out of the meeting. Do you know that? In Zoom, if you right click and disable somebody from the meeting, what is the report printed as? Was kicked out of the meeting. आप इंग्लिश समझते हैं ना? फिर तो थोड़ी देर चुप रहिए। हाँ बोलो। हाँ अभियान, go ahead. Earth pulls stronger, not harder. Stronger. आगे बोलिए। Good. And you put less harder because Again, less harder. The force of pull of moon is weaker than that. Yeah, the English should be good. Why is it more and less? How do you express force? How do you express force mathematically? Because you said mass is constant. So if I take a mango from earth to moon, mass does not change. Then why is the force changing? because the acceleration. Acceleration. What is the exact word? These things clearly tell me how much dedicatedly you all are studying. अगर आप dedicatedly पढ़ते ना, है ना? Who is the main star cast of धुरंधर? जान के अनजान मत बनो। वो तो नहीं बोलोगे, तुम्हें आता है ना, है ना? वो आता है, नहीं बोलोगे। किसी को नहीं आता है, then you all are dumbo idiots. You don't know who is the main star cast of धुरंधर? हाँ ऐसा मुंह करके रणवीर सिंह क्यों बोल रहे हो? ऐसा आता नहीं है क्या? If you don't know who is the star cast of अक्षय खन्ना, ये देखो ये बोला। अगर आपको स्टार कास्ट नहीं आता और आप चुप रह रहे हो ना, then you are super idiots. I will say my students are big idiots. They don't even know who is the India's most blockbuster movie and you don't know the star cast. तो अक्षय खन्ना बोल रहा है, एक तो बोला तो कम से कम अर्जुन रामपाल, और यहाँ चुप्पी मार के बैठा है। क्यों? मैंने पूछा ना। हाँ, that means you paid some attention to it. You are not paying the same attention. After so much of detailed class, if you cannot take the name of acceleration quickly, I'm not blaming Avyan or Asaj or anyone. What I'm saying is that your study at home is not happening the way I want. नहीं हो रहा है। और इसको आप हॉलीडेज मत बोलिए। डू यू मीन टू से द होल डे इज फ्री? अभी मॉल खुला है क्या कहीं पे? सुबह 7 बजे स्मैश खुल जाता है क्या आपके लिए? नहीं ना। तो आप करते क्या हो घर पे? नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। देन आई ऑल्सो लूज इंटरेस्ट इन टीचिंग। जब कोई बच्चा पढ़ता नहीं, मुझे मजा नहीं आता ना। मैं क्यों मेहनत करने का क्या पड़ा हुआ है? मैं क्यों मेहनत करूं, है ना? चलिए, I had initially what I understood, if I give you all homeworks, by the fear of being sent home, you all just do the homework and come back. And all the homework worksheets have got hints on them, which I give so that you can cross check. You all do the hints and you all solve it. If you were good, then you should be able to solve any square root problem without even looking at that. Learning is not happening. It's a sort of copying and presenting me on time, which I agree and I accept that. लेकिन होमवर्क, पढ़ाई तो नहीं हो रहा है। पढ़ाई होने से ऐसा नहीं होता। आई एम नॉट हैप्पी। And after, from today onwards, no child will attend class from home. If the child is attending class from home, the only reason can be he or she is out of station, he or she is sick. If he or she is sick, the parent will send me a prior intimation that the child is sick. Even if you are late, you will come and report here. It will be my discretion whether I keep you in the class or I send you back. No attending from home, apart from these two children who are online children.
Otherwise, I'll right click you and debar you from the class. And if I debar, you cannot enter again. Is that clear? आप घूमने जा रहे हैं, you are at holidays, absolutely fine. If you are attending from home, it means you are out of Hyderabad, or you are ill and you cannot be ill at 9 o'clock. Ill हो तो थोड़ी देर पहले से ही हो ना, उसका इंटीमेशन आना चाहिए मुझे. समझ में आया? टेक्निक मार के कोई घर से नहीं करेगा. फोर्स दैट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू अ सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट. ओके, एंड सिंस दिस इज अ फोर्स, द एसआई यूनिट विल बी, मैं बहुत दुखी हूं, द एसआई यूनिट विल बी, अच्छा वेरी गुड, द एसआई यूनिट विल बी न्यूटन. ही इज अ मिसफिट इन योर क्लास एक्चुअली. व्हाई इज अ मिसफिट? यू नो इट इज नॉट हिज क्राइम. वो बेचारा पढ़ के सब रेडी करके आता है और उसके बाकी दोस्त लोग सब मस्ती करते हैं, इसीलिए वो मिसफिट हो गया. आई एम सैड आई एम नॉट बीइंग एबल टू प्लेस हिम विद सम पीपल हु कैन चैलेंज हिम. रादर यू ऑल आर नॉट गेटिंग अशेम्ड. एवरी डे ही चैलेंजेस यू. एक दिन उसका लाइफ बर्बाद करना. इतना पढ़ के आ कि अर्नब का मुंह बंद करो आज. नहीं नहीं, आप में वो चैलेंज ही नहीं है आप लोगों में. मैं आपकी जगह होता ना, इतना पढ़ के आता है, द नेक्स्ट क्लास आई विल मेक अर्नब क्वाइट. बट ही रूल्स. व्हाई ही रूल्स? वो पढ़ के आता है, मेहनत करके आता है, तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा. क्या वो हॉलीडेज एंजॉय नहीं कर रहा है? वो भी तो एंजॉय कर रहा है. आपको उस पर गुस्सा आता है, हर सवाल का जवाब देता है, ये बच्चा ज्यादा ही कुछ पढ़ाकू है. हाँ है, पढ़ने के लिए तो इधर आया है, आप नहीं पढ़ते हो. राइट, एंड देन वी राइट व्हाट इज प्रेशर. Pressure is defined after last class. I had expected every child will complete that RS Agarwal or RD Sharma whatever books and will come flooded with doubts. It's not possible you will not have doubts. There are 5-digit 6-digit number square roots. You will have doubt. This girl had a doubt, she posted. होगा ही होगा डाउट. और अगर आपको डाउट नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि या तो आपको सब समझ में आया है. इन दैट केस आई गिव माई सेल्फ अ गोल्ड मेडल, और एल्स यू डिड नॉट डू, एंड द चांसेस ऑफ द लैटर इज मोर हाई. Thrust upon area. Thrust is measured, thrust is a force, beta. So the thrust will be always measured in Newton, area is always measured in meter square. Therefore, the SI unit of pressure is force is Newton upon meter square, which is also called as Pascal. So if somebody tells you, how do you define a Pascal? We say 1 Pascal is that pressure. 1 Pascal is the pressure when a force or a thrust of 1 Newton acts on an area of 1 meter square. And if you don't want to use the word thrust, then we will redefine our definition. We'll say 1 Pascal is the pressure exerted when a force of 1 Newton, mind the word, I'm not using thrust, when a force of 1 Newton acts perpendicular on an area of 1 meter square. यहाँ से आ जाता ना 1 Pascal, Pascal is written as PA. 1 Pascal is 1 Newton per meter square. इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 Pascal वो प्रेशर है जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर परपेंडिकुलरली एक्ट करता है. Another way we can define 1 Pascal वो प्रेशर है जब 1 न्यूटन का थ्रस्ट 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर एक्ट करता है. When you use the word thrust, you need not say the word perpendicular. It's in English like when you say bury, you don't say bury under the ground. Bury matlab under the ground itself. What is your past history, you idiot? History itself is a past data. You don't say past history. आप अगर Microsoft Word में past history टाइप करोगे वो 2 अंडरलाइन दे देगा आपको. Grammatically you are wrong. Past, yes, 1 minute. Let me just say this. So how do you define 1 Pascal? 1 Pascal is the pressure. इसको भी लिख लीजिए. 1 Pascal is the pressure exerted on a surface of area 1 meter square
when a thrust of 1 न्यूटन acts on it. जब 1 न्यूटन का थ्रस्ट है ना किसी भी सरफेस के ऊपर एक्ट करता है तो उस सरफेस पे कितना प्रेशर क्रिएट हो जाता है 1 पास्कल. यस बेटा, टेल योर आस्क योर क्वेश्चन. इसलिए तो उसका नाम थ्रस्ट है ना. योर क्वेश्चन शुड बी why is it called a thrust? It is called a thrust because it's a special force जो सिर्फ परपेंडिकुलरली एक्ट कर सकता है. और अगर फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट नहीं करता है तो हम उसे परपेंडिकुलरली कैलकुलेट करते हैं. दैट इज बियॉन्ड योर स्कोप नाउ टू कैलकुलेट द प्रेशर. You cannot calculate pressure with a force that is not acting at 90 degree. Have you understood? एक इस प्रॉब्लम ले, एक क्वेश्चन करें अभी इसके ऊपर. इतना चीज समझ में आया? ठीक है, आइए अब कुछ मजेदार चीज देखते हैं. Yes, please write. This is 1 Pascal. Once you are done, then only tell me. I'll change the screen. 1 Pascal is the pressure exerted on a surface area of 1 meter square when a force of 1 Newton acts perpendicular to it, or when a thrust of 1 Newton acts on it. समझ में आया? अब इसको जरा फील कीजिए, तो फील करो साइंस में. Can you imagine what is 1 meter square? What is 1 meter square? How will you explain me what is 1 meter square? 3 of this. Go to a cloth shop. जैसे रीड एंड टेलर, डिक जैम, ये सब होता है ना, सूटिंग्स एंड शर्टिंग्स. गर्ल्स, यू गो फॉर स्टिचिंग शॉप. हैव यू सीन दैट iron rod with which clothes are measured and cut and sold to you? That iron rod or that rod is known as a meter stick. उसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर. उस साइज का एक स्क्वायर इमेजिन करो. Then what is the area of that square? 1 meter into 1 meter. So that is that is 1 meter square. उस वैसा एक प्लाईवुड या कुछ एक समझ लो, उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा, तब प्लाईवुड जो फील कर रहा है दैट प्रेशर इज 1 पास्कल. डन? ओके, सो लेट्स सी अ प्रॉब्लम ऑन दिस. देखते हैं और प्रेशर को थोड़ा और इंटरेस्टिंगली समझते हैं. बट so this is a block, right? And I'm having some measurements for this block. The length of this block is say 5 meters, all right? The height of this block is 4 meters and the width of this block is say 3 meters, right? And I have a force which is acting on this surface at 90 degree, and this force is 10 Newton, right? And the surfaces are A, B, C, D, fine, and then E, F, G, H. Okay? Can you calculate what is the pressure acting on the surface A, B, C, D? The question is calculate the pressure exerted on A, B, C, D. ये आपको कैलकुलेट करना है. अगर आप बुक में, if you are trying to draw cuboid on book, I don't know how you all draw cuboid. How do you draw cuboid? जरा मुझे बोलोगे? How do you draw cuboid? Just हाँ, 2 रेक्टेंगल को आगे पीछे ड्रॉ करने का. And that's the best way. Yeah, what she's saying is the best way. Draw one rectangle like this, draw the other rectangle like this. Sir. 0.66 Pascal. Very good. This is how you draw a cuboid quickly. Okay, आइए इस प्रॉब्लम को करते हैं. Right, let's solve this problem. So we first write our definition of pressure. Pressure is equal to thrust upon area. अगर ऐसे स्टेप वाइज नहीं किया हो तो अर्णव अभी स्टेप वाइज करो. Pressure is thrust upon area, right? So we write what is given to us.
given area of ABCD. What should be the area of ABCD? The area of ABCD should be, see, ABCD and AGFE, they are same. They are both rectangles. So the area would be 5 meters multiplied by how much? 3 meters, which is equal to how much? 15 meters square. ये समझ में आ रहा है? Hey, you can't be quiet and keep yawning in class. Else I'll close this morning class. You cannot be all quiet. Why are you quiet? वो अकेला बात करता है, उसी को जुबान है क्या, और किसी को जुबान नहीं है? एक तो मुंह बता नहीं आप लोग क्या बना के रखते हो. Is it difficult to attend class at 9 o'clock? Then at 9 o'clock, the half of the world is awake, running their drill machines all around. The sun is shining bright through the windows, and you cannot remain awake. You cannot smile. You cannot do anything. Don't give me those Dumbo faces in the morning. I hate that. फिर मैं सिर्फ उस बच्चा को अकेला पढ़ाऊंगा. 2 class punishment. Everybody detained. No entry in the class. If nobody smiles and laughs, you don't study. That is your problem. That does not mean that you will become a Dumbo in the class and make your faces like this. वो मुझे पसंद नहीं है. एंटी सोशल, सब बात नहीं करना आता है, कुछ नहीं करना आता है, मिक्सअप नहीं करना आता है, हंसना नहीं आता, बना के बैठे रहते हो. हम मम्मा ने करेला खिलाया क्या ब्रेकफास्ट में? देन सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थ्रस्ट? 10 न्यूटन्स. सो our pressure now becomes equals to 10 divided by 15. 10 divided by 15 है ना? तो कितना हो गया ये? 2/3 हो गया. तो कितना? 2/3 रखना है, 2/3 भी रख सकते हैं. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आप लिखिए 2/3 पास्कल. Did you understand this? Okay. Now the twist in the question is, calculate pressure on side GFCB. The next question. Calculate the pressure on the side GFCB. Could you locate what is GFCB? Yes. Yes. Can you calculate the pressure on the side GFCB? Yeah. Calculate. The 5/6 Pascal. 5/6 पास्कल. आप लोगों का हुआ किसी का भी? किसको 5/6 आया है? Who said? Who else said? Apart from? But there is no force acting. सब रेस में लग गए कैलकुलेट करने के लिए. How many of you have watched 3 Idiot? फरहान नाइट्रेट और प्री रेजुलाइजेशन, इन वर्ड्स का मीनिंग ढूंढ के बताइए. और सब, एंड दिस वन इज टू अर्नब. उसको सुबह से डोज नहीं गिरा ना, अब ये उसके लिए है. सब रेस में गिर गए. एंड अ बिग, अगर होता ना एक सिल्की, कैडबरीज डेयरी मिल्क सिल्की टू अवियन, सब रेस में लग गए. फरहान नाइट्रेट और प्री रेजुलाइजेशन. ये तो मेरे दोस्तों के नाम है, फरहान और राजू. डेफिनेशन क्या था फोर्स प्रेशर का? What is the definition of pressure? Otherwise, listen to a story. You know what is the difference between a sheep? You know sheep. मुझे सुनिए, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए. You put one stick around here at a level and you ask the ships to cross. The first ship will jump across that stick. अर्नब सुनते जाइए, ये आपके लिए है. समझ रहे हो? Sheep, भेड़ छोड़ दीजिए. And you ask the ship to run and you put a stick at a height. What the ship will do? Jump. The second one will jump, the third one will jump. After that, you remove the stick. What will you observe? They will still keep jumping. That's why it's called sheep mentality. You love to follow. आपको ये प्रॉब्लम दिया, जब मैंने साइड बदला, आप शुरू हो गए. शुरू किया, वो तो रोबोट है ना हमारा अर्नब, फास्ट कैलकुलेटर, उसने कैलकुलेट भी कर दिया. क्या आपने 2 बार सोचने की कोशिश की, सर ने ये सवाल क्यों पूछा? और वो अर्नब अव्यन अच्छा आंसर दिया.
इस सरफेस पे तो कोई फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा है. Pressure is thrust upon area. Thrust is 0. If numerator is 0, then what is the quotient? 0. लेकिन आप चले गए उसको कैलकुलेट करने. निवेदिता तो एकदम कॉपी लेके लिख रही थी. Means stick हटा दिया, then also jumping. And who was the lead sheep in this race? Our great friend Arnav. 3 gold medals for him. क्या सहजवीर, झूठ मत बोलो. सबसे पहले तुमने आंसर दिया. जब बोला ना, क्योंकि आपके अंदर क्या है पता है? रेस टू रिप्लाई. हैव यू प्लेड वन गेम इन चाइल्डहुड? ऐसे उंगली रखना पड़ता है. चिड़िया उड़ उड़, तोता उड़ उड़, मैना उड़ उड़, बस उड़. तब भी आप उड़ दिखा रहे हो. बस नहीं उड़ता है भाई साहब, क्योंकि आपको ये हैबिट हो गया है ना ये करने का. There is no force acting. Now the second part of the story. Calculate pressure on. Actually, I was writing a different question. Then it suddenly struck me. यहीं पे रुक जाओ. If the same thrust acts on side GFCB, means it's a different scenario where this thrust is now acting on GFCB. अब प्रेशर कैलकुलेट कीजिए. अब प्रेशर होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ, अब प्रेशर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी फोर्स आ गया है. तो कितना होगा? देखो अभी रेडी है एकदम आंसर लेके, है ना? It will be 10, the same 10 Newton divided by what much is the area now? Area is 3 multiplied by how much? 4. 3 कहाँ लेंथ है? 3 विड्थ है. तुम्हें क्या 3D देखना नहीं आता है? 3 is the width, 5 is the length, and the height is how much? 4. So what is the area of this surface? 3 into 4. Very good. That will make it 12. 5 by 6. Ready answer लेके. So the answer would be 5 by 6 Pascal. Acha, tell me between 5 by 6 and 2 by 3 which is bigger? 2 by 3 will give me, what is the value of 2 by 3? It will give me something around 0.67 जैसा, 0.67 Pascal. And what is the value of this? 6 and 5? 6 7s are 42, 6 8s are 48, है ना? So this will be 6 8s are 48, 220, 6 3s are 18. तो कौन सा चीज बड़ा है? कौन सा प्रेशर बड़ा है? ओके, 5 by 6 बड़ा है. अब थोड़ा अपना दिमाग लगाओ जो नहीं लगाते हो. Did the thrust change in either case? No, but the pressure changed. The pressure changed due to area. What is the definition of pressure? Thrust upon area. In the first case, the area was more, that's why the pressure was less. अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है, क्वोशिएंट घट जाता है. Do you agree? Yes. 2 mangoes to be eaten by 1 child, each child gets 2 mangoes. 2 mangoes eaten by 3 child, each child gets less than 1 mango. And in the second case, what happened? In the second case, if you see, the area of the second case was less. This area is how much? 12. This area was how much? 15. अगर एरिया घट जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है. और अगले क्लास में पढ़ेंगे. That is the reason that all your school bags come with straps which are much wider. Why did they not give you something like noodle strap जैसा एक strap दे दिया आपको स्कूल बैग में? क्या होता? School bag is heavy. School bag is heavy. Can we change the weight of the school bag? No, books you have to carry. But we need more comfort on your shoulders. So what should we do? We should reduce the pressure. How do we reduce the pressure? By creating bags which have got broader straps. Area बढ़ा दो. Have you seen a urban clap or an Amazon guy coming for delivery? His bag has got even bigger straps because he carries more load. अब load को तो change नहीं कर सकते ना. A tractor is very heavy and the tractor runs on wet fields where irrigation and agriculture is happening. इसीलिए ट्रैक्टर के व्हील्स काफी वाइड होते हैं, उसका एरिया ज्यादा, वरना ट्रैक्टर नीचे घुस जाएगा.
An army tank uses a chain drive flatbed just to increase the area. अब concept समझो. Should you be given an injection with a sharp needle or with a blunt needle? Sharp needle. A sharp needle has got less area. Less area. It will create more pressure with a lesser force. Person need not inject it in your body like this. धीरे से डालेगा तो ही चला जाएगा. But if the needle is blunt, because we need some pressure to puncture your skin. We need that pressure. वो तो देना ही पड़ेगा, whether you are blunt or whether you are sharp. If it is blunt and you want the pressure to be more and the area is less, the force has to be increased. The person has to give you. गार्डनिंग होस के साथ हम वाटर पाइप पानी देते हैं ना. अब ये गाड़ी धोता है जाने से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास. आपने देखा है, यू हैव टर्न द टैप फुल थ्रॉटल टैप को दे दिया, इससे ज्यादा जोर से पानी नहीं आएगा. एंड पाइप का एक डायमीटर है, बट यू वांट द पाइप वाटर टू रीच फार ऑफ, देन व्हाट डू यू पुट योर थंब इन फ्रंट ऑफ दैट पाइप. आपने पाइप का एरिया घटा दिया, प्रेशर बढ़ गया. Why does a sharp knife cut tomatoes so nicely? A sharp knife has less area. So with the same amount of force, it creates more pressure. And टक 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 कट जाता है. तो आज का आखिरी सवाल जाने से पहले सुनिए, और इस सवाल के बाद आज का क्लास अटेंड खत्म होता है. So there's a nice Christmas party ball night where beautifully dressed girls have come and handsome boys are there, and our friend Uzair is looking to try his luck. So Uzair has a lady, Senorita, standing alone, and he also has a Jumbo, which is also standing alone on that Christmas ball night, right? Senorita and Uzair has to try his dancing partner. Whom should he select as the dancing partner? Senorita does not know dancing so nicely, but extremely good looking and beautiful. Whom will he select as his dance partner? Senorita. यही कर दिया तुम लोगों ने गलती. Senorita, being a Christmas ball night, is wearing a stiletto shoe. Okay? She is wearing, अच्छा से नहीं हुआ है तो ठीक से करते हैं. Senorita is wearing a stiletto shoe. Okay? This is her shoe. This is her shoe. And Jumbo is coming barefoot. देख खेती आदमी है. अगर डांस करते करते सेनोरिटा ने अपना ये हील इसके पैर में डाल दिया, what is the area? Very less. She has a weight. Pressure is more. He will scream his life out. लेकिन हाथी का पांव देखा है कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा. लोग कहते हैं कि हाथी का वही तो नहीं सुन रहा है, ये आधा नॉलेज डेंजर. हाथी के पांव के नीचे अंडे रखने से भी सॉफ्ट बेड में क्रश नहीं होते हैं. The Hathi's area is more. Very less chances. हाथी के नीचे चींटी आ जाता है, मरता नहीं है. पर ये अगर आपको स्टेप कर दिया ना डांस करते करते, let's thump and dance, बस, you'll scream your life. Do you understand? Even in the days of Mughals and all, जब wars होते थे ना, you know how to get the elephants down? The elephants, suppose they are entering a fort, and now the elephants have to be stopped. You know what they used to do? सरसों जानते हैं, mustard? They will pour mustard on that floor. Elephants cannot walk. The mustards behave as ball bearings for them. हाथी गिर जाता है. Man is very, very clever. He knows every way how to tame an elephant. हाथी cannot walk with mustard on the ground. अगर आपने mustard बिखेर दिया ना, हाथी गिर जाएगा, नहीं चल पाएगा. And once the hathi falls, the warrior falls. Gone. That's how people. Why is the elephant not the king of the jungle? Do you know that? It's much more ferocious than a lion and all. The elephant has got very big wings. Wings बोल रहा हूँ, ears, which does not make him see how big he is. Elephant does not understand his size. इसीलिए अपना इर्द गिर्द एलिफेंट टर्न करने में, एलिफेंट टर्न नहीं कर सकता ना स्विफ्टली, तो वही तो होता है. इसे कान बहुत बड़े हैं. तो ये क्रिसमस पार्टी में डांस करते वक्त अगर कोई बच्चा सा हाथी मिले, हाथी को चूज कीजिए. खूबसूरत लड़की पे मत जाइए, अगर उसको डांसिंग नहीं आता है, आपकी पैर तबाह हो सकते हैं.
Next time you watch, that's why, have you seen, next time you are on a flight and you see these cabin crew girls, you see their shoe. They are all very properly decked up. So obviously they should wear heels to look more stylish. None of them wear heels. All are wearing flat shoes. Every cabin crew girl or a lady will wear flat shoe. You know why? Whole day they are standing. They just sit for the takeoff time. If you keep on standing on a stiletto whole day, then what will happen? Your legs will pain up like anything because the pressure is very high. इसीलिए वो flat shoe में रहता है. If you are a teacher who is every day walking in the school, you will seldom see people. अगर आप heel पहन भी रहे हैं तो खोल देंगे थोड़ी देर बाद, आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा. अब pressure ज़्यादा create हो रहा है. So better is to wear flats. Flats will create less pressure on you. समझ में? हाँ, ठीक है.